Assalamualaikum, student of 9th class. In this video, I will discuss covalent bond. In my last video, I told you about ionic bond and definition of bond. In covalent bond, electrons does not transfer from one atom to another atom like आयोनिक बॉन्ड. कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम पर मुंतकिल नहीं होते, ट्रांसफ़र नहीं होते आयोनिक बॉन्ड की तरह. बट टू एटम कम क्लोज टू वन अनदर एंड फॉर्म अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. दो एटम एक दूसरे के करीब आ जाते हैं. फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के दो एटम जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन होता है क्लोज आ जाते हैं और इनके दोनों के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के पास आकर एक हद के अंदर आपस में मिलकर शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं जो दोनों एटम में रिवॉल्व करता है. क्योंकि हाइड्रोजन का पहला शेल है और पहला शेल जो है वो सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट हो जाता है. इन दिस कोवेलेंट बॉन्ड two atoms come close to each other and their unpaired electron form a shared pair of electrons which revolve in both the atom. For example, hydrogen atom contain only one electron. Their two atoms come close together. Their electron form a shared pair and this shared pair revolves in both the atoms. So both the atom of both the shell of both the atom is completed because first shell is completed by two atoms. The second example of chlorine. Chlorine contains 7 electrons in their outermost shell. 2 electron pair, another pair of 2 electron and third pair of electron. Shared pair and pair electron and one electron is unpaired. Similarly, this second chlorine also have 6 electrons, 6 are paired and 1 is unpaired, and this unpaired chlorine electron make the shared pair with the other electron of the other chlorine atom, and this shared pair revolve in both the atom. It contains 6 electrons. When these electrons revolve in this, electron is completed 8 electrons. Similarly, this contains 6 electrons. When the 2 electrons revolve in this, it also contains its last shell is also completed, that is 8 electrons. Only the shared pair of electrons revolve in both the atoms. The own pair of electron does not revolve in the other atom, it revolves in itself. So this is a covalent bond. ये इस कोवेलेंट बॉन्ड में की दूसरी मिसाल में हम देखते हैं कि क्लोरीन के एटम में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर की सूरत में होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर होता है. इसी तरह दूसरे क्लोरीन में भी 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर की सूरत में होता है, 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर होता है. ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन के एटम के अनपेयर इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर शेयर पेयर बना लेता है और सिर्फ ये शेयर पेयर, ये इलेक्ट्रॉन जो इसके लोन पेयर है ये नहीं, शेयर पेयर जो है दोनों एटम में रिवॉल्व करता है, घूमता है. तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन थे, जब ये इसमें रिवॉल्व करेगा इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे और जब ये रिवॉल्व करता हुआ इसमें जाएगा तो इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे. सो इन दिस वे कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म. There are now the types of covalent bond. There are 3 types of covalent bond. If there is a single shared pair of electrons like hydrogen atom, it is called single covalent bond. Similarly, here is only one shared pair of electrons between 2 chlorine atoms, so it is also a single covalent represented by single line. Now, the second type is called double covalent bond. Double covalent bond. For example, when 2 oxygen atoms combine close come to each other, oxygen contains 6 electrons in each atom, in the last shell of each atom. There are 2 pair of electrons. There is also
another pair of electrons, and 2 electrons are unpaired. Similarly, this also contain 2 pair of electrons, 1, 2, and 2 unpaired electrons. The one atom of the one unpaired electron of oxygen combine form shares with the other unpaired electron of other oxygen atom. Similarly, the second electron, unpaired electron, form shares with the other unpaired electron. So there are 2 shared pair of electrons. It is called double covalent bond. It contains 4 electrons own, and when these 2 pair, that is 4 electrons, revolve with it, both the shell are completed. This is the another example of double covalent. Carbon contains 4 electrons, 2 combine with hydrogen, and 2 unpaired electrons combine with the atom of the other carbon. Similarly, here the 4 electrons combine 2 electrons with the other carbon atom, 2 combine with the hydrogen atom. So there are 2 shared pairs, so it is also a double covalent bond. The example is ethene. Now the last is triple covalent bond. Nitrogen atom contains 5 electrons in their outermost shell. Atomic number of nitrogen is 7. First shell contains 2 electrons, and second or last shell contains 5 electrons. 2 are impaired and 3 are unpaired. Similarly, the other chlorine also have 5 electrons. 2 electrons is a pair and 3 are unpaired. These 3 electrons form shared pair with the 3 unpaired electrons for other nitrogen. So there are 3 shared pair of electrons. So this is called triple covalent bond, as represented by 3 small lines. कोवेलेंट बॉन्ड की टाइप में हम ऑक्सीजन 3 टाइप होती हैं, सिंगल कोवेलेंट, डबल कोवेलेंट, ट्रिपल कोवेलेंट। एंड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का एक शेयर पेयर होता है, जैसे हाइड्रोजन, इसे एक शॉर्ट लाइन से जाहिर करते हैं, जैसे दूसरी मिसाल क्लोरीन। डबल कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन के 2 शेयर पेयर होते हैं। एक ऑक्सीजन के आखिरी शेल में, लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन के 2 पेयर होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं। इसी तरह दूसरे ऑक्सीजन एटम में भी 2 इलेक्ट्रॉन के 2 पेयर होते हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑक्सीजन के 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ डबल पेयर ऑफ 2 पेयर ऑफ शेयर पेयर बना लेते हैं। इलेक्ट्रॉन के 2 शेयर पेयर बना लेते हैं, इसे डबल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं और 2 लाइनों से जाहिर करते हैं। इसकी दूसरी मिसाल ईथीन में देखने को मिलती है कि एक ईथीन में कार्बन के 4 एटम होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ मिल जाते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो दूसरी कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर इलेक्ट्रॉन के 2 शेयर बना लेते हैं। ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड की मिसाल है ईथीन। तीसरी और आखिरी टाइप है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, पहले शेल में 2 और आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन 5 में से 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की सूरत में होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर। इसी तरह दूसरे नाइट्रोजन के एटम में भी 5 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की सूरत में होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर होते हैं। एक नाइट्रोजन के 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन दूसरे नाइट्रोजन के 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर 3 शेयर पेयर बना लेते हैं। इन्हें 3 लाइनों से जाहिर करते हैं और ऐसे बॉन्ड को हम कहते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, थैंक यू वेरी मच। सो काइंड ऑफ